वंदे मातरम। हमारे भारत के स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजादी के शानदार 78 साल पूरे हुए हैं और देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। आज हवा के झोंकों में अलग सी खुशबू है, फूलों की छटा और भी निखरी हुई, सुबह की रोशनी एक अलग चमक के साथ बिखरी हुई। हर बात में इन्हीं भावनाओं का समावेश है कि आज का दिन बड़ा विशेष है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस समारोह में यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार नया भारत के थीम के साथ हम मना रहे हैं अपना स्वाधीनता दिवस। Car and celebratory Independence Day greetings to every Indian inhabiting this varied and breathtaking country we live in, and of course to every fellow Indian based in different time zones across the world. Vande Mataram from the land they can always call home. On this August morning, we invite you to celebrate our 79th Independence Day. As our hands, hearts and hopes come together, join us to salute our oneness, relive our history and recommit to our continuing progress, peace and prosperity. As the nation celebrates the dawning of another Independence Day, all eyes see the tricolour, all prayers rise in gratitude and all feet tap to the beat of patriotism. In fact, long after the spoken word has melted and exited our cognitive memory, it is the power of our visual experience that resonates in our recollections. We now take you over to Priyadarshini, our colleague, strategically positioned on the ramparts of the Red Fort to share the spirit and magnificence of this iconic fortress.